our Docker image. Now we're going to discuss about the best practices, like what are the best practices of writing Docker file or writing a Docker image, like how we can create a Docker image like a pro. These are some basic best practices. Like if you have a project, if you have a front end project, or if you have a project like which has multiple files, and there are different files that you don't even want to add those files into the build or into the image. So you can use docker ignore. That will facilitate you like to ignore all those files that are mentioned in this particular file, uh, to be excluded from the to be excluded from the files to be copied on a test folder. Okay, so docker ignore file is I think should be mandatory while using Docker or while creating your own image. Multi-stage builds, it's a very important topic. Like you can create, if you see in a last example, we have an image created, like its size was 117 MBs. We can reduce its size by using multi-stage builds. What is the concept of multi-stage builds? Basically, we create different stages for builds and use multiple builds and use context from last builds. This will automatically reduce the size of your particular image, as we will be like building our code and then using the builded code or builded context. So that will automatically reduce our build size. Okay. The next is never ever install unnecessary packages into your image. As we know that obviously if we gonna install anything unnecessary or anything that is not even useful for you, it will definitely increase the build size of your image. As I have mentioned you earlier, like you can use Alpine versions if you don't have any complexity or complex dependency structure in your software. Like if you have a software application in which there's a complex application architecture, complex dependency architecture, in which you will need multiple dependencies in your local environment. So you will definitely go to the official base images. Okay, you won't be using any Alpine version, because in Alpine versions of that particular base images, there are some basic libraries or basic packages which can be used for simple tasks. Okay, so you can use the Alpine versions for such complex dependency dependent architectures or applications. Okay, so decouple applications, yeah, obviously, it's a concept where you simple decouple your applications. Like a singular container should perform or should be hosting a singular application. Okay, so the next one is minimizing the number of layers. Yes, as we have discussed earlier, then the more the number of layers, the more will be the build size. The less the number of layers, the less will be the build size. Um, the second last one will be sort multi-line arguments. Yes, we have to use like escape characters to run instructions like run, copy, and add. That will add an additional layer on your build context. Then last one is leverage build cache. That's a very important thing, because Docker basically cache different multiple cache while performing different multiple instructions. Like for example, if I have required, or if I have got some base image from a Docker repository, Docker daemon will automatically cache that particular image, and that cache will be definitely being used in if we create a new image from that particular repository. That cache can be used, so that to reduce the time being spent on creating images and requiring all the metadata from Docker Hub. Okay, so I have added different links, or these are all links that I have found while researching on Docker and while creating my own series of you can say demos on Docker.
So you can go through all of these links. Some of these are official reference Docker files, and some of these are like different official platforms explaining how Docker is useful, how multiple features, how different things gonna work in Docker. So uh, this is all from my side. Any question you can ask me so that we can conclude this session, and we can invite our next host to explain the next topic or to start the next session. Any questions for me? Hello, can you hear me? Okay, 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 good. Hamza just texted, I have created the image, but I think container is not created. How can I run command without container name? Okay, Hamza, you don't need to specifically write the name. I have written the name because I want you to easily understand. Like for example, if I create a Docker container without any name, it will assign the container title or container name to a random generated ID. Okay, so it will be difficult for you to understand which container is used for your current image. So I have named it in order to understand, like, yeah, this is our working container for our working image. Okay, so you can use the run container command without the docker name, docker container name. Okay, successfully created the image, but the container is not available in the list. Okay, container will be available in the containers list. You have to run a container. You have to spin a container. You have to launch a container from your image by using Docker run. Okay. Okay. So I think there's no more questions. So thank you very much, guys. This is all from my side. You can communicate with me. You can contact me. You can ask any questions. You can easily ask any questions from me. You can have my links, my communication links from different posts. So thank you very much. We'll meet next time, inshallah. Thank you. Over to Khansa. Thank you, Zaresen. It was a great session. So, guys, now we have Fazil Ahmed, who is a principal software engineer, have been working for over 6 years with expertise in building secure, reliable, and cloud applications. Please join me in giving Mr. Fazil a warm welcome as he guides us through building stack and manage your workstations. So, Fazil, would you please like to begin? Fazil, can you hear me? Can you hear me? Thank you, Khansa. Can you hear me? Uh, Yes, Fazil, we can hear you. okay. Thank you, sir. Thank you for the confirmation. Okay, so let's start. Let me share my. Can Uzair, can you share your screen and share the slides? Yeah, give me 1 minute.
Give me a minute. Yep, sure. Okay. Okay, just a second. I think I have also the permissions and I can also share the screen. So let me Yeah. share my screen. Okay. 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 Sure. Sure. Okay. So I hope you guys can see my screen. So let's start the session. So I'm going to talk about like that how we can create our own stack and in the other word like how we can use the Docker Compose. Actually, it is the same thing. Like let's just say we have an application and like Uzair just showed us, it is a Node.js application. But in the real scenarios, obviously we have a front-end application which might be possible it is built in the React, और जो उसका backend है might be possible जो उसकी APIs है वो Node.js या किसी एक backend language में create हुई होंगी. उसके अलावा obviously अगर ये एक real world की application है so उसमें कोई ना कोई database होगा. तो अब इन सब सिनेरियोज में हम लोग ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन को यानी कि एक सिंगल एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें माइट भी पॉसिबल है 3 कंटेनर्स जो से वो रन करने पड़ेंगे. तो ये इट इज़ अ वेरी बेसिक एप्लीकेशन जिसको रन करने के लिए हमें एक 3 कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी. माइट भी पॉसिबल है कम एप्लीकेशन विद विद कॉम्प्लेक्स कि उसमें हम लोग एक रेडिस कैशे यूज़ कर रहे हो या माइट भी पॉसिबल है उसमें 2 डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हो. So this is the like the scenario. Okay. So इसको टैकल करने के लिए हमें क्या है कि डॉकर कंपोज या फिर अपना अपना एक ओन स्टैक हमें जो सा अपना वी हैव टू क्रिएट आवर ओन स्टैक. सो एक्चुअली दिस इज you can say this is a short description of the like why we need the docker compose or our own stack. So जो हमारा एजेंडा होगा जो हम लोग जो मैं आपको अभी कन्वे करने जा रहा हूँ so उसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे why we need the docker compose कि हमें डॉकर कंपोज की जरूरत क्यों पड़ती है. और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे हम लोग मतलब जिसको गो थ्रू करेंगे विच इज डॉकर फाइल वर्सेस डॉकर कंपोज. डॉकर फाइल भी हम लोग बनाना सीख चुके हैं और हम लोग फिर डॉकर कंपोज बनाना सीखेंगे और उन दोनों में डिफरेंस क्या है और डॉकर फाइल से हम लोग क्या क्या मतलब कर सकते हैं और डॉकर कंपोज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ओके. उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे कि हम लोग डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल जो सी है उसको कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे होते हैं और उसको हम लोग कैसे मतलब खुद कैसे लिख सकते हैं फॉर आवर प्रोजेक्ट एंड फॉर आवर कंटेनर्स. उसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे एक रन कंटेनर को रन करेंगे अपनी जो हम लोगों ने एक डॉकर कंपोज फाइल क्रिएट की होगी उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे अपना एक एप्लीकेशन या अपने कंटेनर्स को रन करेंगे. ओके. So let's start. But before going forward, I need your help. Like was there already like give you a very detailed introduction that how we can create the images, how we can run some of the Docker commands. So can you any of you can you help me to run or answer these questions? So my first question is that how can I get my running containers? So any of you like give me the hint like how I can get like अगर मेरे सिस्टम में कोई containers running form में है तो उनको मैं कैसे get कर सकता हूँ. So any of you like please put in the chat like what command should I run to get all of my running containers. Any of you? Yep. So it is Ahmed Tahir का मैसेज आया कि docker ps को यूज कर सकते हैं. Exactly. So ये कुछ कमांड्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने सिस्टम पे यूज करें और चेक करें कि ये आपके पास चल रही है. ठीक है. तो मैंने docker ps रन किया तो docker ps कमांड मुझे क्या रिटर्न करता है, जितने सिस्टम मेरे 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 सिस्टम में जितने रनिंग कंटेनर्स है ठीक है वो मुझे रिटर्न कर देगा. सो ऑब्वियसली हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि इमेजेस में और कंटेनर में क्या डिफरेंस है. ठीक है. तो अब हमारे कंटेनर्स ये आ गए. इस टाइम मेरे पास ये 2 कंटेनर्स जो उनसे वो चल रहे हैं.
लाइक इफ मेरे पास एक सिनेरियो है कि अगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि मैं वो सब कंटेनर लेके आना चाह रहा हूँ जो कि इस टाइम रनिंग में नहीं है, या इस टाइम किसी वजह से मतलब एरर आया या कुछ भी हो गया, तो मैं ऑल कंटेनर लेके आना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट डॉकर ps और मुझे साथ में एक के टैग ऐड करूंगा और ये सब कंटेनर्स मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, ओके okay. So this from how we can get all of my containers by running the docker ps -a command. Okay, so my next question is that how I can run or how I can pull the image from where, like sorry, this is my third question, like how I can get the local images. So anyone of you know like how I can get my local images? Any of you? Yep, thank you, Vikas. So like docker image. Okay, so actually these are the images that I already pulled from the other sources, from the remote sources. Like this should be like Docker Hub, or this might be possible. This is the other AWS registry like ECR or ACR. Might be possible. These are some remote registries, but these are my local images. Okay, so if I want to pull a new image in my local system, so what I can do for that? Can you please write down the command in the chat? How I can get a new image? Let me show you the Docker Hub as well, where we have a multiple images stored. Yep, this is a Docker Hub, and let's just say I want to pull an images. I just need to get to know about any sort of images, like Nginx. So this is the image, and this is actually the pull command, and by using this command, I can get these images in my local system. And if I want to know about any further about the Nginx images, so this is the documentation that I can use. And this is also mentioned that how I can run this command. So in just a second, we are going to run Nginx. So this is actually, I just want to show you that this is a documentation that we have a extensive sort of documentation. If I want to get other sort of like images, so what we have to do, I can search like MySQL. So this is the MySQL images, so I can also check all of this documentation, how I can pull that image. This is the command, and how I can run the images. So this is the command. Okay, so let's move again to the our terminal. Okay, so let me get Nginx image, docker pull. Okay, so if you see that I have not mentioned any tag there, and by default, if I'm not going to mention any tag, it's just add by default or explicitly like let a latest tag. Okay, and it's pull the image in my local system. Now I should be able to run this command. So my next question is that the pull images, we know how to pull the images. So like next question is that how I can run the container from the images. So let me run the container from the Nginx image. So we can run, we can use the run command, docker run, and then we can use the my image name. Okay, if you see this, according to my terminal, the docker run nginx is in the running farm. We can also see this from the other terminal. Okay, docker ps.
Just let me reopen this. So according to these commands, the Nginx is now running. So it's running on port 80. So let me show you, is it I'm able to get access this or not? So let me go to the local host, and this is the port 80. Okay, so anyone knows about like why I'm not able to like even the terminal is showing me that the Nginx is running, but I'm not able to run the local host. Anyone knows that what is the reason? Like it is a running container. Yes, Abdullah, you are right. Like we have not assigned a port. Yeah, you can say that we have not published the port. Yep, you are right. So let me like remove this. Okay, so let me run the again, and this time I will specify the port. Okay, so Docker run, and now I will going to specify the X, and this time I will add a port like this time this should be visible to me. Okay, that's great. So at this time we have specified the port, and we have the welcome to Nginx page. Okay, this is actually it is a default page. Okay, and yep, we can also use the 80 and 8080 port, and we are just going to see this, that how we can add the multiple port, or we can run how we can run the multiple Nginx in our machine. So we can see this in just in a second. So where is my slides? Okay, so like we know like all of these answers, like just give me another answer, which is a stop container, that how we can stop a running container. So Docker PS, so this is my running container. If I want to stop this container, take the Nginx container, what I have to do, like Docker stop, and just I have to just pass the Docker container ID. Okay, actually this command will stop this container. If I will go to again with the Docker PS, so this time this should not return the Nginx container because it is stopped now. Okay, we can also use the Docker container, like the containers names, to stop the containers or run the container or the restart containers, and we can also use the container IDs. Okay, so actually these are the basic command that I want to know, like to know to run these commands before going to further. So we all know these commands and how we can use these commands. Okay, so let's go to the another slides. Next slide. So this is our next slide. So let me give you a scenario. Like let's just say run Nginx command. Okay, and 80, and this time actually give me a name tag as well. Actually, the name tag is used for giving you a meaningful name to your container. So I'm going to use this and give you a container one. Okay, or I'll just use a okay. So it's done. Let me open that, and this time we have an Nginx container, but we have a container with a name, with our provided name. Okay, so this is actually the Nginx container and running the port 80, and it's publishing the port to our port 80, and it is the container name. Let's just say there is a scenario like I want to run a new Nginx server. Before some of the reasons, like might be possible there is some developer, I my developer colleague, and they just want to check the application, and वो मुझसे बस ये चाहता है कि मैं उसकी application को अपने system में एक दफा चलाकर check करूँ. So how this is possible? It either is it possible or not? Yes, it is a possible. We can run the multiple Nginx in our single
in our single machine by using the Docker. So how we can use this? Like we can use the Docker, and we can use the Docker run command, and the same images will be going to their Nginx. And this time I will going to the name and NT container 2, and is a port. This time I will going to the port 82. Okay. So port 82 is already used. Sorry. 82. I think just let me check that this port is open. Let me check the which is a free port, so again I demonstrate you. Okay, so this should be available. 81. Actually, there's too many containers running in my system, so I'm just confused with the work. So let's try this here. Oh, sorry, this actually saying that the container is already exist. Let's say the container 8. Okay, so now it's on running the same machine but in the different port. So let me show you. Port, and now we have a. So you can see that we have a port mapping concept in the Docker, and we can run the same image in our same local machine on the different, like on the different ports. So can you guys run this command, and let me show you that is it also possible to you to run these two Nginxes in the same machine. So you just have to run these commands on the different port. Like let me share the command with you so you can also run in your machine. Okay. Okay. Let me copy from here. So can you guys run this command? And after that, you have to run this command, and let me show you if this command is also work for you. Actually, I'm waiting for you. Like you can share the screenshot with me. Like either is it working for you? I hope like you are running this command.
like Docker run 80 with, if you guys any feeling any issues, like facing some issues, so please put it in the chat. आपको जस्ट ये कमांड जो सी है वो CMD में या किसी भी अपने टर्मिनल में जो आपको लाइक आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. ओके, वो कास्ट स्क्रीन शेयर. That's very good, and I hope this is also working on the other port. Okay, so in the port 80 and the port 81, it is working for you. Good. Okay, so let's move into the next topic, which is actually our main topic. So before, like, we have I have a more concern. Like, let me show you some other tag we can use with our run commands. Okay, so when we use a run command, we can also use a parameter. Like, there is some sort of images that we can't run this without passing the parameters. Like, I have an example of like databases. If you know about the databases, obviously when we run the command of the MySQL, so we have to pass some like the admin password and the admin username, something like that. So let me run your terminal and let me show you and try to run. I will try to run a new command, a new container for the MySQL. So what I have to do, like docker run MySQL. Okay, so if you see the error, there is an error. Like, I have to provide an environment variable, which is the MySQL root password, and like I have to provide the one of any like the parameter there. So how I can pass the parameter? Like, we have to provide the e tag and something like this. Okay, so this is how I can run the images with the parameterize. Okay, so actually this is the prerequisite to creating or running with the DockerCompose file. So okay, so we all know about these basic things. So now we can move into the main thing, which is how we can create the Docker Compose, or what is actually the Docker Compose file. So this is the slide that's showing us that Compose is a tool for defining and running the multiple containers. Okay, Docker application with Compose, you use a YAML file to configure your application service. Then with a little command, with a single command, you can create, stall all of your services, your configuration. So like previously I mentioned that this is the Docker Compose file and it is written in the YAML. And if we have a multiple services, like we have a my app, this is our application, and we have a MongoDB in our database, and like we can run all of these things in a single command. Okay. So the next question is that why we need the Docker Compose file. Like, obviously we all know, like, running the multiple containers become cumbersome. Easily handle multiple container at once. Like obviously I have a multiple containers in my real applications, so it is very like cumbersome, or it is very difficult for me to run the run command for all of these services one by one. So instead of this, Docker give us a solution, which is the Docker Compose file, and we just need to mention all of our services in a single file in a single time. And हमें जब भी आपको ज़रूरत होगी, just need to run the single command, and the single command will provision all of these services for us from the single command. ओके, तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी हम लोग सिंगल फाइल में कर सकते हैं. यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि उसमें पोर्ट, अभी आपने देखा कि मुझे पोर्ट के इश्यूज आ रहे थे, उसके अलावा मुझे कंटेनर नेम्स के इश्यूज आ रहे थे. तो इस तरह के इश्यूज जो हैं बार बार किसी एक डेवलपर को ना आए, या अगर मुझे आ गया तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डेवलपर कोलीग्स को ना आए. तो उसके लिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, वी यूज ऑल ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इन अ सिंगल प्लेस, और वो सिंगल प्लेस पे बार बार हम लोग डॉकर कंपोज को रन करेंगे. तो इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं, बार बार उसको उन एरर से बच सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग द डॉकर कंपोज. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि डॉकर फाइल में और डॉकर कंपोज में क्या डिफरेंस है. सो इसमें बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है कि डॉकर फाइल क्या बताती है, जैसे कि अभी उज़ैर ने आपको मतलब बताया
कि Docker file describe how to build images. ओके कि इमेजेस कैसे बनाई जा सकती हैं कि इमेजेस को जैसे उजैर ने बताया कि इमेजेस को हम लोग मतलब अल्पाइन इमेजेस लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बाद डिफरेंट लेयरिंग करेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली हमें कोई एंट्री पॉइंट बताना पड़ेगा, लेकिन उस जो एट द एंड जो हमारे पास उसकी आउटपुट आएगी वो आएगी हमारे पास डॉकर इमेज। डॉकर फाइल को यूज करते हुए हमें डॉकर इमेज आएगी हमारे पास। और जबकि हम लोग डॉकर कंपोज जब यूज करते हैं, व्हाइल वी यूज द डॉकर कंपोज इज यूज्ड टू रन द कंटेनर्स। तो डॉकर कंपोज में जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे या डॉकर कंपोज में जो हम लोग सिंटैक्स लिखेंगे उसकी आउटकम एक कंटेनर होगी, ठीक है। तो डॉकर फाइल की यहाँ पे भी मेंशन है कि डॉकर फाइल की आउटपुट जो सी है वो डॉकर इमेज है, और डॉकर कंपोज की जो है आउटपुट हुआ है डॉकर कंटेनर से। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि देखने जा रहे हैं कि एक ये भी स्लाइड है कि हम लोग डॉकर फाइल में और डॉकर कंपोज में क्या फ़र्क होता है। कि डॉकर फाइल की लेफ्ट साइड पे हमारे पास डॉकर फाइल है जिसमें हम लोग मतलब एक अल्पाइन इमेज ले रहे हैं, अपनी वर्क डायरेक्टरी बता रहे हैं, अपने मतलब कोड को कॉपी कर रहे हैं अपनी लेयर में। उसके बाद क्या नाम लेते हैं हम बेसिक से एक कमांड चला रहे हैं और उसको एक एंट्री पॉइंट बता रहे हैं, जस्ट लेट्स इट। और डॉकर कंपोज में डॉकर कंपोज को ऑब्वियसली डॉकर इमेजेस चाहिए होती हैं डॉकर कंटेनर रन करने के लिए। और हम लोग डॉकर कंपोज में बता रहे होते हैं कि लाइक if we have an image, this is going to be done in the port 30 and port 3000, and if we have the image the other services which is a mongodb, and this is going to be take the image of mongo, and this is going to be run on the port this okay. So अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, we are going to create our own docker compose file. And but before going further, if you have any questions regarding this theoretical, so like theories, so let me know so I can answer this in that place if you have any questions. Yep, actually there's a question like does Docker Compose act like a script? So my question, like my answer is like yes, this act like this is a file that we can use to provision our all of the services. Like same like we have a Docker file, and in the Docker file we have all of the our instructions like how we can going to create the image. Same like this, we can use the Docker Compose file to provide the instruction that how we can going to create this containers. These are all of these containers. And the other thing that we can mention in the Docker Compose, that how these containers are going to communicate with these with all of them, like with each others. Okay. I hope this answer your questions. Okay, so let me start from creating the image, and but before going to create the Docker Compose file, I have another task for you guys. I have some command that I have already written. Actually, these commands are these things, these command that I'm going to share with you guys. Actually shows us why we need the Docker Compose. It clears us more like what is the need of Docker Compose. So let me share like or let me run of the commands. Okay. Okay. So this is a run command, same like that we are previously used, and where we have a d tag, and which is detach the command from the process, and after that we have a p tag, and for the publishing the port, and after that we have a environment variables. Like obviously we are going to use a MongoDB, and the MongoDB requires to run some of the like. You can say like some of the environment variable which is required by the MongoDB image. Okay.
and let me use the image which is a Mongo. So I hope all of you guys know about the Mongo. Actually, Mongo is a database, actually no SQL database. So I just want to show you something in this example. So okay, so actually it's again giving me an error, like the container name BL MongoDB is already exist. So for fixing this issue, what I have to do, like I have two solutions. Like I can change the name of BL MongoDB, okay, and it is the first solution. Like I can say that this is a not BL MongoDB, it is MongoDB 1 or MongoDB 2, something like that. So I can change my name because it's up to me, like what name I'm going to prefer. But this creates some issues. Like if I'm using this BL MongoDB in my the same name in my consecutive next command, so this will create some issues. So फिर दूसरा वाला इसका क्या होता है, but is the second solution, like I have to delete this BL MongoDB from my containers. So let me find that. So this is a Docker PS. So obviously I can't find this container. Might be possible this container is in the stopped condition. So let me find that as well. So this one. So okay, this is a created. Let me stop this and then delete that container so that I can create a new one. For deleting the container, what I can use the rm for deleting that container. So hopefully now I will run this command. It will allow me to create the MongoDB. Let me check the command. Docker run g. Okay. So let me see. Okay, now this time the Mongo is running and the name is Mongo BL MongoDB. Okay, if I will go to my port just to check that is it either working or not, localhost. So it's showing something like we can consider that it is working. That it is working. It look like you are trying to access the MongoDB or HTTP on this native port. So we can assume that this is our success. Okay. And then obviously this is a database, and for accessing the database and for creating some sort of like tables and deleting the table, obviously need some sort of UI so that we can create and delete a table by using the UI. So there is another images which we can use, which is a Mongo Express. Okay. So if you know guys, like the what is a Mongo Express, actually the Mongo Express is a lighter version of accessing ID, like for accessing the UI. It actually provides the UI to accessing the MongoDB. Okay, so I have already written this command. So let me show you like how this is done. Okay. Hope the text is visible to all of you guys. Okay, so I have to provide the Mongo. Okay, let me check the command. The password name. So this will give me an error, like the Mongo Express is already exist. So we have to remove that first. Okay, so it is not there. Obviously, this will be in the stopped container. So for accessing these, I have to use a Docker PS. Okay, so this is the images. So I have to delete this one. Okay, I can also use this name for deleting that. Yes, it's deleted now. So now this command should be okay.
If I go to like the port 8081, so it should show the IDE. Okay, so actually it's showing some error. That is something that I want to show you guys. Like actually the error is like Mongo Express. Let me show you from the log as well. If you see that the Mongo Express is not there because it's not running. So why it's not running? Because yes, so we can also check the logs there. Why this not running? Docker log. I think this is a command to check the Docker logs. Yep. So if you guys see the error, could not connect to database using the connection string. This. It means that the Mongo Express is trying to access the Mongo instance, the MongoDB instance, but it's not able to connect with that instance. And actually, the problem is like the Docker states that if a container wants to connect to the other container, so what we have to do, we have these containers should be in a network. Okay, so होना ये चाहिए कि जो MongoDB है और Mongo Express है उनको एक ही नेटवर्क में होना चाहिए. सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग करेंगे. सो ये कुछ कमांड्स हैं, ये मैं आपके साथ आई एम गोइंग टू शेयर दिस कमांड विद यू ऑन इन द चैट. एंड what we are going to do, like first we are going to create a network by using this command. Okay, docker network create, and this is our network name. Okay, you can specify any network name, and when you are going to create the image actually the container, so you have to provide a dash net real network, like this is the network that we are just created. So in that manner this should be run, and you are going to be visible, like this time the Mongo Express should be connected with our Mongo. So I'm going to share these commands with you guys and run this command, and let me show what output you got there in your system. Sure, Lucas. So this is the command. So can you run this command? Like, let me share this command. Yep, this is a share. So run these commands and let me please share the screenshot. Like, are you guys like it is working for you guys? Because this is not working for me, because I don't have a same network. But now you are going to create a you are going to first create a network and then assigning the network to all of these containers. So please run these commands and let me show what is the output in your system. Actually, I'm waiting for you guys, and let me know if you find if you face some issues there. So if it's run some successfully run this command, so it should be show a UI in the browser at the port 8081, which is connected with our database.
I have not received any screenshot. So is it not working for you or is there some issue? Like आपको ये कमांड कौन सी हैं, ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, ये आपको अपने टर्मिनल में, अपने CMD पैनल में, अपने CMD में जाके रन करनी है. So is okay. Yep, actually it should take some time. Okay. Sure. Okay. ओके, सो हमजा ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया. ओके, सो मैं ये स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें. इस तरह से आपको स्क्रीन शेयर हो जाएगी. इससे क्या हो रहा है कि मोंगो एक्सप्रेस चल रहा है और मोंगो एक्सप्रेस, इट्स मीन दैट मोंगो एक्सप्रेस इज वर्किंग फाइन एंड इट्स एबल टू कनेक्ट द MongoDB. So that is success. Okay, so hopefully the other guys are also working on that, and hopefully they will able to get this screen. And if they find some issues, they can send a message on the chat so we can look on that. Okay, so let's move on to our main topic, which is the Docker Compose, and now we are going to create a Docker Compose file. So let me open just give me a second. Yep. So this is our, we are going to create our Docker Compose file. So this, on the left hand side, we have a Docker run command that we are like extensively used, and we know like what is going to, what is the benefit of the run command, and what is these parameter that we are passing to this, and how we can use the run command. So we are familiar with that. So on the right hand side, we have a Docker Compose file. This is a very simple, and so we have to mention the version. Actually, currently we have a 3.8 version. So just move in that this is actually not actually it's tell the Docker Compose file which is the version, which is in which version this file is written. Okay, and after that we have a services tag, and this is the main thing, and under this umbrella we have our all of these services. Let's just say we have a MongoDB, and this is our user provided name. It can be like MongoDB1, or like I can say the FazilDB, something like that. It is up to the users. After that we have to specify the image. So this is the image tag, and then we have to specify the name of the image, which is the Mongo, and this should be like the same as the like the Docker Hub is provided, like the Mongo. And if we want to specify any sort of like version, so like we have to provide a tag as well, like colon latest 3.17, like what we want. And after that we have to specify the ports, and like we have did in the Docker run command. So this is the 27017. This is this is the actually the published command. We can also change this, but obviously this is up to us.
And after that, we have to provide the environment variables, and these environment variable we also provided in the run command. So this is are going to be right there. Okay, so if I want to run the Mongo Express, this will be the same. This is the run command, and this is the name of the image. This should be the same, and like the container name is a it, it it may be different, but the image name should be the same as the Docker Hub with the provided. So after that, we are going to provide the ports and then the environment. This is actually the syntax of writing the Docker Compose file. Okay, so let me show you. I have already written Docker Compose file. Let me find that for this solution. Okay, so this is our Docker Compose file that we have just written in this for the just for you guys. Like we have a version and we have a service, and in the service umbrella, just forget about the my app. I will come into that in this section. And we have a Mongo, and you are pretty familiar with this all of these tags like image, ports, and environment. And after that, we have a Mongo Express. Okay, so the next question is that how we can use this uh, this this Docker Compose file in our configuration. Obviously, by using that, as I mentioned that by using this configuration, we are going to run or we are going to provision the containers. Okay, so okay, we're just going to run this, but before that, this is the new thing in this section. Actually, this is the my app, and actually this is my application name. And as just before, the Uzair has mentioned that how we can create a Docker file. So I have already created a Docker file. This is our node application, which is going to communicate with our databases. Okay, so actually this application telling us that this application depends on the MongoDB, which is this is this is the MongoDB. Until and unless the MongoDB is not provisioned, this my app will not be going to start or not going to be start the provision. Okay, so the restart always means when something errors, like something happen in the my app or it's crash, so it always restart the my app containers. Okay, so after that we have a build and the context. Like obviously my application is not in any registry or not in the public or in the not in even in the private registry. So I'm just telling that you need to pick the context or the Docker files from the same directory. So actually it's picking the Docker file from the directory, and when I run the command or when I run the Docker Compose files, actually first it's build that image and then create the images of these services. So let me show you that how these Docker Compose will work. So this is the Docker Compose. Actually, when you install the Docker, it will automatically install the Docker Compose CLI as well in your system. Okay, so this is a Docker Compose, and what we have to do, we have to run the build command. If you see the logs, it's just trying. It's first trying to build the images. Like if you see that this is the internal commands of the Docker files. Even I have not provided. I've just run the Docker Compose that build, and from that Docker Compose file, it's picking the Docker file, which is this one, and trying to run these commands. Okay, so let me up Docker Compose. Actually, this is the command which will create all of these services. Okay,
So actually we find some issues here. Let me delete the old one that I have created. Okay. So remove this. Okay. Let me try again. Okay. So actually, if you see that from a single command, I'm able to run all of these services like this, which are mentioned there. The first service is my app, which is a Node.js application. Second service is the MongoDB, which we require to store data. And the third is the Mongo Express. Obviously, if I need to add or delete some databases tables, so I can use a Mongo Express. So let me show you the application as well. But before going to this, let me post and okay, so it is working. And actually, these are some database that it is required by my application. So let me create first. Okay, so my DB is created. Let me confirm that. Yeah, it's done. So let me check first. So my application is working on localhost 3000. So let me check. Yep, it's working. Like I have a user profile image, and this is the mode night. And let me change his name. It is Mark. It's mean that my whole application actually it is a real world application actually scenario. It's working fine. We have a front end, we have a back end, and then we have obviously the database. So same like that, we can also add the other services. Let's just say I want to add a new services. So what I have to do, like I just need to change this, and let's just say I want to use a cache. Okay. And I want to give a container name and like obviously here I have to provide a valid name. Let me go to the Docker Hub and let me show you that what sort of name we can use there. Like we can use a Redis cache. So we have to use the Redis word here because this is the image name. Okay, so we can use this. Obviously, Redis is also publishing a port. We have to manage this port, and if there is no environment variable, so we just have to remove that. Let's just say I'm not sure which port Redis is going to publish, so no problem. You can check that from the documentation and do it. That is 60. Now we can. Let me check from here. First, that is 6379. Okay, so actually it's publishing the default port, which is the 6379. Okay, so that's how like this is okay. I can add the more services in my container. Okay, but if I want to like delete all of these services,
So what I have to do, I have to run a new command, which is actually, let me also show you from the Docker desktop how it is look like there. Okay, so these are the independent containers that are running, but this is the container, and actually our Docker desktop is also knows that this is running in a single, by the running in a single, you can say the Docker Compose file. So it's grouped it. Okay, so we have a Mongo Express, the demo my app, and then we have a Mongo, which is a MongoDB Express. Okay, so if you observe one thing like that, in the previous example, we have to provide a network, but in this scenario, we didn't mention any sort of network in our configuration. So actually it is because of when we run the Docker Compose file, it's create a network for us, and obviously the Docker knows that these are going to be communicated with each other. So it creates a network for us. We don't need to take care about it. Like it's created a network for us, and it just all of these services are going to be a part of this network. Okay, so actually this is the power of like the Docker Compose, and this is the ease that we can get from the using the Docker Compose. Now if any of my developer colleague want to run this application, so it just need to run the Docker Compose up command file, and it will the provision all of the required services for my developer colleague, and then push these the changes into the production. Okay, so if I want to, this is the last command that I'm going to run, and if I want to deprovision, or I just want to deprovision all of the services, so what I can do, I can run the Docker Compose down. So actually, this is also the power of the Docker Compose. Like if you remember that in our previous example, I have to remove one by one and one by one container, and actually this is very cumbersome for me. And like running the Docker PS command and then finding the name and then removing the container. Actually, this is very time consuming. And but now I just need to run a single command. It will delete all the network, and if you see that at the last it's removing the network. So actually it's create a network for us, and then provision all of these services in the network, so that they can communicate, these services can communicate with each other. Okay, so this is the Docker Compose file, and this is how we can create our own stack. We can add the Redis, we can also add some other services like that, all of the services that is going to be need with our application that we can add there, and that run the Docker Compose up file. So this is I think this is going to be like the end of the Docker Compose files. So if you guys have any questions, then you can ask. So again, I answer. Actually, Hamza, asking a question can we run all the images in a single container rather than creating a different container? Yes, actually, it is a possible to run a different container in a single container. So, but it is a not recommended way. Like actually, in that the Docker recommended us to run the multiple container in a single network, and then these container are going to communicate with each other. So this is the recommended way. And Vikas, you are asking that where is the networking? So obviously, I think I have answered this question. Docker Compose file will create the network for us, and actually, we don't need to worry about that. Okay, so any other questions? If we don't have any question, then we can move into the next topic. So I will also share these Docker Compose and these node file, and these are node application. So you can guys you can check this. Okay. Thanks, Vikas.
Okay, so I think there is no more questions. So let's move to our other topic, like that, like how we can use these in our development. Actually, the next topic is like how we can use a Docker as a pro. Okay. So before going to that, obviously I have some concern again. So there is two. So okay, so let me close this. I think this is done. And okay, so actually this is a Visual Studio Code, and I have opened a file which is a Hello Python file. Actually, I'm not a Python developer, so I don't know about what it is, but actually this print line will print a Hello World application. I hope. Okay, but now if I want to containerize this application, and I want to containerize it application by using the Docker file, and I also want to use write some like Docker Compose file. सो ऑब्वियसली हमें उज़ैर ने बताया कि हम लोग डॉकर फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग डॉकर कंपोज फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बट हम लोगों ने ये भी देखा कि हम वी हैव डिटेल में हम लोगों ने देखा कि उसका एक एक सेक्शन उज़ैर ने हमें बताया कि रन कमांड क्या करता है, उसकी लेयरिंग क्या होती है, एंड कंपोज में भी हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट सर्विसेज को रन करते हैं। बट ये जो हमें टूल्स हैं, जो डिफरेंट टूल्स हैं, मैं भी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, बट विजुअल स्टूडियो और जो अदर टूल्स भी हैं वो भी हमें काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि हमें चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें मैंने क्या किया, आई जस्ट यूज़ an extension of the Visual Studio, which is actually the Docker, and make sure that this extension is installed in your system. Okay, so this is already installed. So now I just want to containerize this application. Okay, so how I can do this? The first method is like I can write all of this code myself, and just writing the Docker file and writing the Docker Compose file. But actually, uh, this tool and this extension will help us to writing the Docker files, or actually the containerize the application. So this is something like, yep, this is a Docker file. Let me click on that. Okay, so this is asking me like which is the application, like this is a Node.js application, Python class, and or something like that. So we have already like mentioned that Python Django, Python class, journal, and if we have a C++ application, we can choose that. But obviously it's a Python class application, so let me choose this one. And it is asking me like which is the choose the apps entry point. Okay, so I have choose the hello python.py. Obviously there is a single file, so this will be the my entry point. Okay, and now this is asking me, and what will be the default what will be the listening port. So by default it's just automatically pick 5002. So if I choose the like the .NET application, obviously it's choose according to these, and if I choose I'll choose the React or Node.js application, so obviously it will choose according to this. So it now is choose a 5002. So let me do this, and now this is asking me include the optional Docker Compose file. So I'm saying yes. So this is the magic. Like it's create all of these file for us. First, let me show you the where is the Docker file. So this is the Docker file, and it's creating, and it's create the 3.8 slim. Actually, this is the best recommended
from the Python and exposing the 5002, and these the command. I know you already guys know about that better than me, that what these commands are going to use. Okay, so इनका मकसद क्या है कमांड का, आई थिंक ये आप मुझसे बेहतर अब जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये हमारे लिए डॉकर कंपोज फाइल को बना देगा। ऑब्वियसली इसके बाद हमारे पास डॉकर कंपोज भी है, और क्योंकि इसमें जस्ट हमारे पास सिर्फ एक सर्विस थी, तो वी हैव अ सर्विस टैग देयर एंड वी आर यूजिंग द पोर्ट बिल्ड, एंड हम उसको बता रहे हैं बकायदा पाथ देकर के डॉकर फाइल कहाँ पर है और पोर्ट मैपिंग भी हम लोग उसको कर रहे हैं। सो इसका मकसद ये था जस्ट एक्सटेंशन का बताने का कि ये अच्छी चीज़ है कि हमें चीज़ों का पता हो, कि हमें पता हो कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई मसला आ गया, so we should know like what is the service tag, what is the code, and what is the version meaning, and what is, if I go to the Docker file, so there's a different tags. So it's a good thing that to know about this. But obviously these are the tool that help us a lot to like the bootstrap our work, and like हम लोग अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं by using these stuff. Okay, so ये एक चीज थी। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो डॉकर है वो डेवऑप्स की मतलब लाइफ को तो काफी ज्यादा हद तक जो है आसान कर चुका हुआ है। कि कैसे कर चुका हुआ है कि वो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को कंटेनराइज्ड करते हैं, नो मैटर के सर्वर में उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हैं या नहीं है, वो क्या करते हैं वहाँ डॉकर इंस्टॉल करते हैं और डॉकर की इमेजेस को जो कि एज अ कंटेनराइज्ड होती हैं उनको वहाँ जाकर रन कर देते हैं। ठीक है, इज अ वेरी गुड थिंग, और ऑब्वियसली वी लर्न अबाउट दैट हाउ दीज आर गोइंग थिंग, मतलब किस तरह से ये चीजें जो सी काम कर रही हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बट पॉइंट ये है कि अच्छा इसमें ये भी है कि हम लोग एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को भी ऑब्वियसली इज डॉकर ने दिया कि लेट जस्ट से कि मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन है वो मैं रन करना चाह रहा हूँ और दूसरे डेवलपर के पास वो डिपेंडेंसीज नहीं है, उसके पास रेडिस इंस्टॉल नहीं है, उसके पास लेट जस्ट से कि मोंगो इंस्टॉल नहीं है, माईसीक्वल इंस्टॉल नहीं है, तो उसको मैं अपने डॉकर कंपोज दूंगा, उसको कहूंगा डॉकर इंस्टॉल कर लो और वो डॉकर रन करेगा और दैट्स इट, उसके पास भी वो एप्लीकेशन रनिंग में चलने लग पड़ेगी। ठीक, बट इज दैट पॉसिबल कि ऐसा हो कि मैं वो तो कोड चल पड़ेगा और वो एक पब्लिश फॉर्म में जाके पब्लिश हो जाएगा, प्रोडक्शन में चलने लग पड़ेगा। बट माय क्वेश्चन इज लाइक कि इज इट पॉसिबल कि एक डेवलपर क्या करे, वो कोड दूसरे डेवलपर को सेंड करे और वो डेवलपर उसको चला भी सके, हालांकि इट डजंट मैटर कि उसके सिस्टम में वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हैं कि नहीं है, ना सिर्फ उसको रन कर सके बल्कि उसमें रन टाइम में चेंजेस भी कर सके। तो यस इट इज पॉसिबल कि डॉकर हमें क्या करता है, डॉकर एक चीज प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं डेव इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो अगर आप डेव इन्वायरमेंट्स को देखें तो एक बड़ी सिंपल से उसने बात की हुई है, द डेव इन्वायरमेंट इनेबल यू टू कोलैबोरेट by easily by allowing you to share work in progress code with your team members. Like if I just want to share the running piece of code with Uzair, so I just need to like I can share the code with all of its dependencies. मैं अगर एक चीज पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उज़ैर भी उसी चीज पे काम करे बट उज़ैर के पास वो डिपेंडेंसीज नहीं है, so मैं ये कर सकता हूँ by creating the dev environments. ओके, सो लाइक किस तरह से कर सकता हूँ, अगर मैं डॉकर डेस्कटॉप की बात करूँ तो हमारे पास एक आर्टिकल है जिसको एक रिपोजिटरी एक्चुअली में गिटहब की, विच इज द ऑसम कंपोज। ओके, सो यहाँ पर काफी ज्यादा इमेजेस जो सी ऑलरेडी क्रिएट है। लेट्स जस्ट से कि मुझे कैसा एनवायरनमेंट चाहिए ये मेरे पे डिपेंड करता है। लेट्स जस्ट से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे Vue.js का एनवायरनमेंट चाहिए, जस्ट नीड द Vue.js एनवायरनमेंट एंड जस्ट वांट टू डेवलप द एप्लीकेशन इन द Vue.js, सो जस्ट गो देयर एंड क्लिक ओपन इन डॉकर एनवायरनमेंट। तो ये क्या करेगा कि डॉकर एनवायरनमेंट में मेरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा और उसमें जो जो चीजें चाहिए मुझे Vue.js की डिपेंडेंसीज वो वहां पर होंगी। ओके, उसके बाद अभी जो हम लोग अभी अच्छा यही जो सेम कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट सेम ही है, और लेकिन हम लोग जो अभी आज इसको एग्जांपल में देखेंगे वो हम लोग यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में ही। एक कॉन्सेप्ट है डेव कंटेनर्स का, सेम वही चीज है बट ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड ने उसको अपने नाम दिया हुआ है और डेव डॉकर डेस्कटॉप ने डेव एनवायरनमेंट्स का नाम दिया हुआ है।
तो इस काम को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, यानी कि आपको अपना रनिंग पीस ऑफ कोड अपने दूसरे डेवलपर के साथ विद डिपेंडेंसीज शेयर करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, विच इज installed. Yep, this one. So this is the dev containers. Okay, so we have to install this. This is already installed in my Visual Studio Code. So I recommend you to install parallelly with me, so we can check the power of this. Okay, so it actually takes some time. You can आप अपने साथ साथ मतलब जैसे देख रहे हैं उसके साथ साथ आप dev container extension ऐड कर लें और उसके साथ साथ फिर हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो जैसे ही मैं डेव कंटेनर इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे पास लेफ्ट कॉर्नर में एक चीज़ आ जाती है. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अभी सिर्फ यहाँ पे मैं हॉवर कर रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि ओपन अ रिमोट विंडो. इसका मतलब ये है कि मैं अभी अपने एक्चुअल सिस्टम पर हूँ. ओके, ठीक है. सो बट अगर मुझे एक न्यू सिस्टम चाहिए, लेट्स जस्ट से मेरे पास अपने टीम लीड आते हैं और अरशद भाई आते हैं और मुझे बोलते हैं कि फजील हमें ना एक ऐप बनानी है और उस पर थोड़ी R&D चाहिए, और ये जो ऐप है हम लोग .NET में बनाएंगे, ठीक है, या कह लें कि हम लोग Node.js में बनाएंगे. तो अब Node.js का कौन सा वर्जन यूज़ करना है या Node.js की कौन कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ. तुम उस पर R&D करो और चेक करो कि Node.js के फलाने वर्जन पे और रिएक्ट के फलाने वर्जन पे ये पॉसिबल है कि नहीं है. तो उसमें मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं क्या करूँ, ये सब के सब वर्जन जो से लेट्स जस्ट से कि 13 वर्जन अपने पास इंस्टॉल करूँ, रिएक्ट का 12 वर्जन अपने पास इंस्टॉल करूँ, और माइट भी पॉसिबल है कोई डेटाबेस का भी पुराना वर्जन इंस्टॉल करूँ और देन मैं अपने पास काम करूँ, फिजिकली इंस्टॉल करूँ अपने सिस्टम में. तो या दूसरा तरीका मेरे पास क्या है जो डॉकर मुझे रेकमेंड करता है, वो क्या करता है कि मैं अपना एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूँ. ठीक है, उसमें मैं कैसे करूँगा कि अच्छा यहाँ पर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है जिस वजह से मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है. ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि एक कंटेनर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, डेव कंटेनर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ठीक है आप किस में यूज़ करने जा रहे हो, C++ को, जावा, .NEट, Node.js, पाइथन किस में यूज़ करने जा रहा हूँ. मैं कहता हूँ कि मैं नोड में यूज़ करने जा रहा हूँ. मतलब जो मेरी एप्लीकेशन है मुझे टीम लीड ने बोला नोड में बनानी है, मैं नोड में क्रिएट करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये यहाँ पर आ गया, आई डोंट नो व्हाई. सो इट्स क्रिएटिंग डेव कंटेनर. ओके, तो वो क्या करेगा कि मुझे एक डेव कंटेनर क्रिएट करके दे देगा. एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी ओपन था, तो लेट मी क्रिएट सम अदर लैंग्वेज, लेट मी ट्राई विद अदर. करता हूँ .NET के साथ. ओके, अगर आप यहाँ देखें तो ये क्या कहता है कि ओपनिंग रिमोट. ठीक है, ये मेरे लिए एक रिमोट मशीन क्रिएट कर रहा है मेरे लिए. उसमें वो ऑल डिपेंडेंसीज ऐड कर देगा जो कि एक .NET एप्लीकेशन को चाहिए. तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको क्रिएट करने में. ऑब्वियसली जैसे कि हम लोग इमेजेस को गेट कर रहे होते हैं तो बैकएंड पे ये भी इमेजेस को गेट कर रहा है. ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक ऑलरेडी डेव कंटेनर मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि is it ये. सो ये मेरा एक डेव कंटेनर है जो कि क्या है कि वहाँ चल रहा है हमारे पास. हाँ, ये एक रिमोट कंटेनर मेरे पास चल रहा है. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया कि ये मुझे एक उसने एप्लीकेशन Node.js की एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट बना के दी है, ये मैंने नहीं बनाई, ये Node.js की अपनी एप्लीकेशन बना के दी है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, सो अगर आप इसको देखें तो ये मेरा लोकल टर्मिनल नहीं है, मतलब ये ऑब्वियसली दिस इज ऑल इज गोइंग टू इन माय लोकल मशीन, ये मेरे पास लोकल मशीन में चल रहा है. बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये एक सेपरेट वर्क स्पेस है, और अगर मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊं नोड ब्राउज़र, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन में चल रही है हेलो रिमोट वर्क.
ओके, सो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से मल्टीपल एनवायरनमेंट्स बना सकता हूँ। और अगर दोबारा टीम लीड मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं ठीक है फजील, तुमने अपने सिस्टम में तो चला लिया, अब ये सेम रिक्वायरमेंट मुझे भी चाहिए, तो एक ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं मतलब जो मेरे टीम लीड है उनको मैं ये बोलूँ कि अपने पास ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लें जो जो इस नोड को चाहिए। तो यहाँ फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं ये सारे का सारा कोड जो है, ये जितनी आपको फाइलें नजर आ रही हैं, ये गिट में ये कहीं भी मतलब गिटहब बिटबकेट कहीं भी शेयर करूँ और उनको बोलूँ ये क्लोन कर लें। और वो जैसे ही क्लोन करेंगे और वो क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे और एक ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और करेंगे ऐड कंटेनर। ओके, और जैसे ही ऐड कंटेनर करेंगे, वो ऐड कंटेनर की फाइल्स को वो ऐड करेंगे, उनके पास सारे का सारा ये एनवायरनमेंट आ जाएगा। ठीक है, और वो अब नोड जेएस की एप्लीकेशन को अपने पास चला सकते हैं, इवन दो कि उनके पास नोड जेएस जो है लोकल सिस्टम में इंस्टॉल है नहीं है। और ना सिर्फ वो चला सकते हैं बल्कि इस रनिंग कोड को चेंज भी कर सकते हैं। सो इस तरह से क्या होगा कि ना सिर्फ मैं उनके साथ अपना कोड शेयर कर रहा हूँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैं एक तरह से उनके पास एक रनिंग एनवायरनमेंट शेयर कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे रनिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या डिपेंडेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पर डेफ कंटेनर क्या करता है, डॉट डेफ कंटेनर के नाम से ना अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देता है कि अभी अगर आप देखें इस इसका नाम है नोड जेएस, इस डेफ कंटेनर का यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो डिफॉल्ट इमेज जो सी है वो ये वाली है। लेट्स जस्ट से कि मुझे इस इमेज के साथ कुछ और भी मजीद ऐड करना है, या मुझे इसके साथ कुछ कुछ चेंजेस करनी है, या कुछ मजीद इंस्टॉल करनी है, मुझे चीज़ें कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, तो वो भी मैं मजीद यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ डॉकर को यूज़ करते हुए। तो ये एक मतलब कि पावर है कि हम लोग क्या करते हैं कि डॉकर को यूज़ करते हुए ना सिर्फ अब डेवऑप्स को फायदा हो रहा है कि हम लोग डेवलपर्स को भी हम एज अ डेवलपर हम लोग इन्वायरमेंट जो है अपना शेयर करते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड आई रिकमेंड कि आप इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। सो इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो मेरे आस ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। लेट मी ओपन द क्वेश्चंस। Yep, is it? Okay, so if you guys have any questions, so please ask. You can put the question in the chat. So if there is no any questions, so we can move further. Okay, so Hamza, आपका क्वेश्चन है कि add container is reading the file or is being stored in the like in the git। अच्छा, ऐसा है कि अगर ये अपना स्क्रीन शेयर है तो ये जो मेरे पास फाइल्स हैं ये अभी मेरे लोकल सिस्टम में ही है। ये डेव कंटेनर भी मेरे पास लोकल में ही है और ये जो फाइल्स हैं ये सब लोकल में ही है। मैंने एक न्यू कंटेनर भी क्रिएट किया था, पता नहीं वो भी क्रिएट हुआ कि नहीं, वो आपको दिखा सकता हूँ, इसमें बहुत बेहतर समझ आएगी। ठीक है, तो ये स्क्रीन शेयर है आपके साथ। ये देखिए डेव कंटेनर सी शार्प को जो मैंने बनाया था ये वो बन गया। ठीक है, और इसमें देखेंगे जो जो एक सी शार्प की एप्लीकेशन को जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर है। ओके, ये प्रोग्राम डॉट सी एस है, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर कोई हेलो वर्ल्ड की कोई इन्होंने एप्लीकेशन या कोई ऐड की होगी। अच्छा ठीक है, इन्होंने वेदर की गेट वेदर बाय सिटी सिटी नेम देंगे, उसने एक डिफॉल्ट एक एपीआई बनाई हुई है। तो अब लेट्स जैसे कि मैं ये वाला जो कोड है ये अपने किसी कुलीग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे जस्ट ये एक मेरा सेपरेट टोटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गिट ऐड करूँगा। ऑब्वियसली यहाँ ऑलरेडी गिट ऐड है, लेकिन इसमें मैं अपने क्रेडेंशियल ऐड कर सकता हूँ, अपना गिट ऐड कर सकता हूँ, इसको कहीं ना कहीं पुश करूँगा और ऑब्वियसली वो एक मेरी अपनी पर्सनल रिमोट रिपोजिटरी होगी। और लेट्स जस्ट से कि ये कोड है, इस कोड में मैंने कुछ लिखा और उसके बाद उसको मैंने कमेंट कर दिया, कमिट कर दिया या पुश कर दिया। उसके बाद वो डेवलपर जो दूसरा डेवलपर है वो उसमें कोलैबोरेट कर सकता है, उस पर चेक कर सकता है। ओके,
So I have some slides, so let's read this slide as well. ठीक है, dev containers को हम लोग देख चुके हैं. dev container tool that allows you to refer to isolate the environment. Okay, and okay. This means that instead of running your code natively on your computer, you can create a container with all necessary dependencies and tools installed. Okay, so ये हम लोग already देख चुके हैं कि ये कैसे हो रहा है. उसके बाद dev container के benefits क्या हैं? Consistency है. लेट जस्ट से कि जो सिस्टम एनवायरनमेंट मेरे पास है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे डेवलपर के पास भी सेम एग्जैक्ट वही एनवायरनमेंट हो, तो मैंने आपको दिखाया कि हम लोग वही चीज़ कोड में मेंशन करते हैं. सो एक्चुअली दोनों के सिस्टम में सेम कंसिस्टेंसी है, सेम कोड और सेम एनवायरनमेंट भी है. उसके बाद कोलैबोरेशन है, हम लोग डेव कंटेनर को यूज़ करते हैं. ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल यूजर जो से हैं, मल्टीपल हम लोग जो है उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं. पोर्टेबिलिटी है, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कोड जो है वो उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, यानी कि उसको कोई प्री डिफाइंड मतलब चीज़ें नहीं चाहिए. और अगर कोई एक नोड जेएस की एप्लीकेशन है तो उसको नहीं चाहिए कि वो नोड इंस्टॉल्ड हो, या रिएक्ट की एप्लीकेशन है तो या एंगुलर की है तो NGCLI इंस्टॉल्ड हो. टोटली पोर्टेबिलिटी या कोड के अंदर ही सब कुछ मेंशन है कि उसको क्या क्या चीज़ें रन करने के लिए चाहिए. टोटली आइसोलेशन, ऑब्वियसली अगर मैं अपने सिस्टम में एक डेव कंटेनर बना रहा हूँ तो वो मेरे सिस्टम से भी आइसोलेट है, जो किसी भी तरह से मेरे सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है. मतलब उसको जो जो डिपेंडेंसी चाहिए उसके ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल्ड है. ओके, सो आई होप कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, और अगर नहीं तो हम लोग एक 10 मिनट की एक ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर इस सेशन को एंड करते हैं. तो आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पुट करते हैं. इसका 1 मिनट में वेट करता हूँ, अगर नहीं तो फिर इसको 15 मिनट की ब्रेक पे जाते हैं. ओके, सो आई होप देयर इज नो क्वेश्चन. सो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो काइंडली आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं चैट में, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कर सकते हैं, ताकि हमें आंसर या अरशद भाई, बिलाल, उजैर जो भी हैं हम लोग उसका आंसर कर सकें. और थैंक यू. 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं. थैंक यू सो मच.